हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो करंट सिचुएशन पैन आउट हो रहा है इन द मिडल ईस्ट रीजन बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दैट्स हैपनिंग बिटवीन ईरान, इसराइल एंड अमेरिका। तो द करंट पॉइंट जंक्चर जहाँ पे हम करंटली खड़े प्रोबेबली दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल जंक्चर बिकॉज इफ यू लुक एट थिंग्स हाउ दे हैव प्रोग्रेस। जब ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो, तो थिंग्स ओनली एंड ओनली हैव एस्केलेटेड। कहीं पे भी किसी पॉइंट पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सिचुएशन डी एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। आई हैवंट स्पोकन अबाउट दिस सिचुएशन एट ऑल। मैंने अब तक ना पोस्ट या ना कभी वीडियो बनाया, बट आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ राइट टाइम व्हेन आई एड्रेस द पीपल दैट फॉलो मी और द कम्युनिटी दैट वी हैव बिल्ड। तो इफ यू लुक एट थिंग्स वेयर इट स्टार्टेड, अमेरिका एंड इसराइल अटैक एंड टुक आउट दी जो लीडरशिप है ईरान का। देन ईरान रिटेलिएटेड, उसने अटैक्स किए जो इसराइल के बेसिस है, अमेरिका के बेसिस है इन द मिडल ईस्ट रीजन। देन इट वेंट ऑन टू अटैक दी ऑयल फैसिलिटी जो मिडल ईस्ट रीजन में है। एंड देन अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद किया गया एंड जो कंप्लीट फ्लो है ऑयल एंड गैस का उसको स्टॉप किया गया, उसको हैम्पर किया गया। लॉट मेनी एफर्ट्स वेंट ऑन टू रीओपन दैट, बट नथिंग एक्चुअली प्रूव्ड आउट टू बी वर्थवाइल सक्सेसफुल। तो काफ़ी कुछ किया गया, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, बट इफ यू लुक एट वेयर थिंग्स आर हेडिंग फ्रॉम नाउ, तो नाउ यूएस हैज़ गिवन द अल्टीमेटम if Iran doesn't open up the Strait of Hormuz in 48 hours, will again do additional steps to counter Iran. Will do even higher impact strikes on the Iran. उसकी जो infrastructure है, electricity infrastructure है, उसको हम target करेंगे. And before even that ultimatum came from the US, ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया था कि हमारे अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी भी वापस अगर अटैक किया जाएगा तो हम पूरे मिडल ईस्ट रीजन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट करेंगे। तो इवन ईरान इज वेल प्रिपेयर टू डू दैट एंड दैट्स व्हाई इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे करंटली हम है, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल जंक्चर। वी ऑलरेडी at 23,000, but the current situation where we are at, it can even get worse, right? So in the last 10 years, if you look at, we have seen probably COVID, we have seen probably the Russia-Ukraine war that is still going on, we have seen India-Pakistan conflict, but this situation that currently we are in, and if you are into markets like me since last 10 years probably, this situation currently is probably one of its kind, right? I mean, that has not impacted India as such directly. Russia-Ukraine का war भी चल रहा है, but that probably didn't impact us that much. In a way, we still were impacted for some time, but then we came out of that maybe with time lag, right? But this situation जिसमें करंटली हम है, इट हैज़ दैट पोटेंशियल टू इम्पैक्ट अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये अभी भी कहीं पे भी डी एस्केलेशन कहीं पे भी किसी एंगल से होता हुआ नहीं दिख रहा है। करंटली अगर देखेंगे, लॉट मेनी पीपल से कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले सिक्योर कर लेना चाहिए था, उसको ऑलरेडी अगर उसके लिए जो अमेरिका है या फिर इजराइल अगर प्रिपरेशन उसको पहले करके सिक्योर कर लेता तो प्रोबेबली ये सिचुएशन इतना खराब नहीं होता। बट जस्ट थिंक लॉजिकली, जस्ट टेक वन स्टेप अहेड एंड इफ यू थिंक कि अगर ईरान अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है तो ऑलरेडी जैसा उसने किया है कि जो ऑयल फील्ड्स है, जो फैसिलिटीज़ है गैस की, ऑयल की, वो उसको भी तो तबाह कर रहा है, उसको भी तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट? तो अगर ऑयल एंड गैस की अगर फैसिलिटीज़ ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आप क्या लेके जाएंगे, मतलब बचेगा क्या जिसको आप लेके जाएंगे, राइट? तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू है ही नहीं। मतलब इवन इफ जैसे अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना चाहते हैं, इवन वो हो भी जाए तो इसका क्या गारंटी है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए या इंप्रूव हो जाए, बिकॉज ये वॉर अब ईरान यूएस या फिर इसराइल के कंट्रोल में है ही नहीं। वेयर इट स्टार्टेड प्रोबेबली जब ये अटैक हुआ, द लीडरशिप वॉज टेकन आउट एंड देन जो अर्लियर स्ट्राइक्स हुए थे, आफ्टर दैट द ईरान जिस मोड में है, इट इज इनटू रिवेंज मोड। तो इस मैडनेस का कोई एंड होता ही नहीं है। इट इज जस्ट एस्केलेशन आफ्टर द एस्केलेशन दैट हैपेंस एंड वही हो रहा है अब। येस्टरडे पहले इसराइल ने उनकी न्यूक्लियर साइट के आसपास अटैक्स किए, देन ईरान ऑल्सो डिड सेम थिंग, उसने भी इसराइल के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के आसपास है वहाँ पे बम्बार्डिंग किया। तो इफ यू लुक एट दैट इज अनदर स्टेप ऑफ एस्केलेशन दैट हैपेंड। अब जब यूएस बात कर रहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना चाहते हैं, इफ ईरान डजंट अबाइड बाय अस, डजंट एग्री विद अस और डजंट कम टू टर्म्स ऑफ टॉकिंग विद अस, देन हम क्या करेंगे, ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा ऑब्लिटरेट करेंगे। ऑलरेडी क्लेम करता है कि हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, राइट? बट स्टिल दे थिंक नाउ विल डिस्ट्रॉय योर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट ईरान हैज सेड इन रिटर्न इज विल डिस्ट्रॉय द टूरिस्ट प्लेसेस दैट आर देयर इन द मिडल ईस्ट रीजन, विल डिस्ट्रॉय फर्दर IT infrastructure that is there in the Middle East region, will destroy the energy infrastructure that is there in the Middle East region, will also destroy the water desalination plant जो है। अब मिडल ईस्ट अगर रीजन आप देखेंगे तो कंप्लीटली 100% आई थिंक 95% ऑपरेट करते हैं डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स से, ना उनके पास रिवर्स है ना और कोई सोर्स है। तो अगर वाटर एज अ रिसोर्स अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो जस्ट अंडरस्टैंड वेयर द सिचुएशन इज गोइंग। मतलब कहीं पे भी कोई एंगल से सिचुएशन अभी भी डी एस्केलेशन की डायरेक्शन में जाते हुए दिख नहीं रहा है। इन स्पाइट जो 22 कंट्रीज है जिन्होंने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, बट दैट डजंट सीम टू बी वर्किंग एट ऑल। एंड इवन people or the countries have underestimated the capabilities जो ईरान के पास है। they thought probably they have capability to strike over 2,000 kilometers, but then last night I think yesterday they tried to strike a base जो Indian Ocean में around 4,000 kilometers away, right? So the capabilities that they have, the ammunition that still they have, and the capability that they can demonstrate further is still unknown. I mean, and because of which the situation currently is definitely not under control, और ये और ज़्यादा खराब हो सकती है is what I currently feel, and because of which market can still even show further more downside movement, and we might see even further pressure. So this kind of situation is something probably many would not have seen earlier, and there is a natural tendency to panic in situations like this. But that exactly is where I wanted to talk about the situation currently we are in. So see, अगर fear is the primary emotion that is currently driving
driving all your decisions of buying and selling, then probably you need to really think, have you really taken money from someone that you have invested, or is it something that is critical going to come maybe probably in 3 months that you need money for, koi shaadi hai, koi function hai, and that money if you had actually invested, then probably fear could drive your decisioning. But if fear is not the prime motive, right, matlab agar if you're feeling bad, you're feeling sad, that is completely okay. If your earlier portfolio was in profits, अब सारे प्रॉफिट्स अगर उड़ गए हैं, वैनिश हो गए हैं, तो इट्स ओके. आई मीन इट्स नॉट समथिंग हैपन टू यू, हैपन जस्ट टू यू, इट इज हैपनिंग टू एवरीवन, राइट. मतलब फीलिंग बैड एंड फीलिंग सैड इज कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स ओके. बट द पॉइंट इज इफ fear is emotion that is driving your decisions, then you really need to think कि what is the reason and why. If you had maybe taken a leverage or maybe doing a intraday trades or taken an MTF positions, which is completely not recommended in the current situation, because it can really go in either way. So watch out for your emotions is the primary message. I mean, every situation like this, the war that kind of happens or unforeseen event that happens, always try to understand what kind of emotions are driving your decisioning. अगर ये इमोशंस पे अगर कंट्रोल कर पाए, डिसीजनिंग बेटर हो सकती है अगर हम इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, राइट. तो इमोशंस को वॉच करना, अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, एंड देन बेसिस दैट एटलीस्ट फ्यूचर में जो गलती मे भी पास्ट में हुई है, यू कैन टेक स्टेप्स टू नॉट डू दैट काइंड ऑफ मिस्टेक्स अगेन. तो आई विल हाईली encourage, just watch your emotion that you have. Fear if is the primary motivation, you really need to rethink about your positioning in the market. Then additionally, if you look at what is happening, see जो currently tensions हुए मिडल ईस्ट रीजन में, currently if you before this war, if you look at the situation, मिडल ईस्ट was viewed as a destination जहाँ पे financial investments हो, real estate investment हो, data center related investments हो, AI related investments हो, there was a lot of flow. Even people from India travel a lot, they invest a lot, real estate में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं. बहुत ही सिक्योर सेफ जगह माना जाता है जो मिडल ईस्ट रीजन है, दुबई है, UAE रीजन जो है. बट आफ्टर ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट जो करंटली हुआ है, द एंटायर दिस सिचुएशन हैज गॉट क्वेश्चन हाउ सेफ रियली इट इज़. And how though I mean it is definitely there are benefits like tax advantage वगैरह है, but how really safe that place is, all those kind of thesis और जो narratives है, they are under question. तो ये सारी जो situation है, इसमें India probably can actually get into a situation जो actually blessings in disguise साबित हो इंडिया के लिए, right. मतलब जो investment probably real estate में वहाँ पे plan किए जा रहे थे, they might come to India. And I was listening to yesterday the Lodha management, they are saying कि people who were sitting on the fence now are actually thinking कि भाई वहाँ पे invest करने से अच्छा इंडिया में इन्वेस्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे उस तरह के प्रॉब्लम्स तो नहीं है. तो ये सारा जो सिचुएशन है ना, मतलब चाइना प्लस वन वाज वन थिंग दैट आई टॉक्ट अबाउट, क्वालिटी पावर जो कंपनी एक्चुअली विटनेस कर रहा है. तो चाइना प्लस वन वाज वन ऑफ द थिंग्स, बट देन एंटायर मिडल ईस्ट प्लस वन थिंग कैन प्ले आउट, राइट. मतलब डेटा सेंटर्स हो, GCCs हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, ऑल दैट कैन एटलीस्ट पार्टली फाइंड अ वे इनटू इंडिया. और अगर पार्टली आफ्टर द वॉर, मे बी प्रोबेबली 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, जो भी सोच रहे थे अगर डाइवर्सिफाई करने का अगर सोचेंगे, तो पार्टली एटलीस्ट इट कैन कम टू इंडिया, एंड दैट एक्चुअली कैन मैसिवली बेनिफिट. तो सी एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक all the time. See, I'm not talking about traders at all, they play along both the sides, but as an investor, if you're thinking about long term, you have to be really optimistic and think positively, because these kind of situations where currently we are, ups and downs, the negative hurdles are always going to come and block your way and make you feel maybe you're not doing great. But then you have to be optimistic. We are definitely going to come out. काफ़ी सारे anecdotes दिए जाते हैं कि previously जो भी सारे wars हुए हैं उसमें definitely we have come out very quickly. This might not be that exact situation, it might take time. The crude basket that has reached elevated levels and it is anticipated it can even reach 200. अगर ये अगले 2 हफ्ते में जो भी चीज़ें हो सकती है, तो probably it can even go higher from here. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अभी डिस्ट्रॉय हुआ है, आज कतार मैनेजमेंट, कतार का जो मिनिस्ट्री है वो बोल रहा है कि डिस्ट्रॉय जो चीज़ें हुई है उनको रिपेयर करने में 5 साल लग सकते हैं. तो अगर 5 साल किसी इंफ्रा को रिपेयर करने में लग सकता है, तो थिंग्स नॉर्मलाइज होने में टाइम लगने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. तो इंडिया जो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें इंपोर्ट करता है, लाइक ऑयल एंड गैस, तो उस पर तो इम्पैक्ट होगा ही. इट माइट हैव टू बेयर ऑल दैट प्रेशर. तो सिचुएशन एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो, कार्गो रिलेटेड हो, ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में टाइम लग सकता है. बट आफ्टर दैट इफ यू थिंक बियॉन्ड दिस वॉर, चीज़ें कैन एक्चुअली prove to be very very good for us companies in India, right. I mean just think for a moment, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी करंटली मिडल ईस्ट रीजन में डिस्ट्रॉय हुआ है, और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, ये अगर वहाँ पे अगर जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको वापस रिपेयर एंड ओवरऑल लगेगा, वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा. इंडिया तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो मिडल ईस्ट रीजन में ऑपरेट करती है, तो उनके लिए और ज़्यादा बिजनेस भी तो आएगा. तो इफ़ यू ट्राई टू थिंक जस्ट बियॉन्ड दिस वॉर कि क्या इंडिया के फेवर में, इंडियन कंपनीज के फेवर में वर्कआउट हो सकता है, एंड इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दोज कंपनीज दैट कैन एक्चुअली बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, प्रोबेबली मे बी 6 months डाउन द लाइन, जब ये वॉर की कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, राइट, जब ये एंड हो जाए सिचुएशन, तो उस सारे सिचुएशन को, उन सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना इज इवन मोर क्रिटिकल. इफ यू लुक एट मी, आई मीन सी आई हैव नेवर एनालाइज कंपनीज इन द पावर सेक्टर, बट करंटली लास्ट few weeks I have spent a lot of time understanding what power companies are doing, where their business is heading with data centers coming, renewables coming. Lot many companies are witnessing
एक्सट्रीम और ट्रिमेंडस टेलविंड। तो ये सारे बिजनेस को लर्न करना, स्टडी करने का ये प्रोबेबली बेस्ट टाइम है। कीप योर स्टॉक लिस्ट रेडी, डू योर एनालिसिस, कीप दैट एनालिसिस रेडी, बिकॉज जब सिचुएशन आएगा व्हेन थिंग्स आर अवेलेबल एट अ चीप डर्ट रेट्स, यू शुड बी रेडी विद ऑल दैट एनालिसिस। अगर ये सिचुएशन का करंटली टाइम का अगर आप यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, योर एनालिसिस इज नॉट रेडी, तो जब सिचुएशन आएगा तब उसको एक्शन क्या करेंगे, राइट? मतलब सिचुएशन को सिर्फ देखना एंड लेट इट गो एंड नॉट टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट इज आई थिंक अनदर बिग मिस्टेक दैट पीपल डू, राइट? मतलब आके कोविड चला भी गया, मेनी पीपल मिस द बस, राइट? आई मीन इफ यू अगेन आर गोइंग टू डू दैट सेम मिस्टेक, then what's the point of being in the market, right? मतलब keep your analysis ready, keep your list of stocks maybe where you have convictions, where you have done the research, where you feel confident about the management ये deliver कर सकता है, previously इस situation में उसने अच्छा किया है, तो ये सारा अगर आपका analysis ready होगा तो you can take benefit out of this, and that probably is the message I wanted to deliver. I am doing that. I am going to continue to post some of the videos that I am currently working on, and probably that is what you also need to do. I mean, I think maybe I can cover 50 companies, but there is a lot many that is currently available. See, yesterday I was looking at companies in the power generation जो wind energy बनाती है. अब not a stock buy sell recommendation, but just look at what has happened to Suzlon या फिर Inox Wind. They're available at 50-60% discount. The business is doing extremely well. Just couple of days ago I had posted कि जो wind energy का contribution है meaningfully बढ़ने वाला है power जो हमारा energy basket है उसमें। तो कितने कंपनी से जो बेनिफिट कर सकते हैं, डेटा सेंटर थीम है, डेटा सेंटर के रिलेटेड जो रिलेटेड बिजनेसेस है, कूलिंग है, वायरिंग है, केबलिंग है, कितने सारे बिजनेसेस हैं दैट कैन एक्चुअली बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सो आर वी रेडी विद ऑल द एनालिसिस दैट वी नीड टू डू बिफोर हैंड वाइल वी आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब आएगा अगर और मार्केट नीचे जाता है तो आर वी रेडी विद दैट? इफ नॉट देन हाउ आर यू गोइंग टू टेक द बेनिफिट? सो दैट्स द मैसेज, कीप योर एनालिसिस रेडी, कीप योर इमोशंस इन चेक. Don't just be fearful. I mean, see, it's okay to feel bad, but don't just have that emotion of fearness, because ये fear से ही अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे and you try to take the benefit, you will come out as a winner, right? मतलब you will have to be in that state of mind. Maybe don't look at portfolios every day if that helps. Focus on the research analysis part, keep your analysis ready is the message, and let me know if your queries and if I can help with anything. I definitely will come back in the probably in the next video or in the comment section. So stay strong, and let's see how when it ends. I'm just wishing and hoping it just ends quickly, and then we are out of this situation to take the benefit of the upcoming quarterly results. That is again a very very critical aspect. मतलब ये quarterly result की जो कॉन कॉल्स होने वाले हैं, they are absolutely very important to position कि जहाँ पे हम currently है उसमें ऐड करना है नहीं करना है, कहीं से एग्जिट करना है, तो दिस कॉन कॉल्स आर गोइंग टू प्रूव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सिर्फ Q4 का रिजल्ट की बात नहीं है. The Q1 of FY26 and even Q2 of FY26 are going to get impacted जो currently situation है. तो I'll keep you posted. I'm going to make obviously videos on the company जिसको हम cover करती है, and maybe even few more. So let me know if your queries. I'll address on the upcoming video. Thank you so much.